Let us have a modicum of patience for the richness and complexity of humanity. The wanton cruelty of the few is not worth our ire. Be silent. हेलो, डेस्कटॉप का एप्लीकेशन मोबाइल में रन कर सकते हैं इस तरीके से? हाँ कर सकते हैं। तो वर्किंग कैसी रहेगी? उसके अंदर माउस तो वर्क करेगा नहीं है? तेरा पूरा फ़ोन उसमें चला जाएगा, मतलब एक तरीके से तेरा नहीं, मतलब एक अलग फ़ोन आता है वो उसके अंदर टेलीकास्ट होने, मतलब उसके अंदर एक अलग फ़ोन बन जाता है, ये समझ जा। मुझे ये करना है कि मेरे ऐसे एक लैपटॉप में सॉफ्टवेयर चलाता हूँ मैं, हाँ तो फोन पे चलने वाला, फोन पे ऐसे नॉर्मल तो उसका फोन का एपी किया और उसमें वो सारे फोन दिए हुए हैं इक्विपमेंट। कोई मतलब नहीं है, तू एक ऐप होता है ब्लू शार्क करके मार देना। क्या नाम बताया? ब्लू शार्क। अच्छा, वो मार देना, वो तेरे फ़ोन के अंदर में ही, मतलब टैब के अंदर, उसमें लैपटॉप के अंदर ही एक टैब के अंदर है? हाँ वो फ़ोन बना देता है। तो वो उसमें तो हाँ।
जो चाहिए वो कर सकता है, जितने ऐप चाहिए उतने डाउनलोड कर ले फ़ोन का, मतलब एक तरीके से फ़ोन ही है वो, और कोई है कुछ भी नहीं। तो एक मिनट कर ले कोई ना। और बिस्तर दूर आया। दूल्हे दादा की दिल्ली जान। हो कहाँ? दिल्ली हूँ। जॉब ढूंढ रहा है नहीं ढूंढ रहा हो? ढूंढ ही रहा हूँ, मिल नहीं रही है बस। गरीब लोग क्या ही कर सकते हैं। और टैबलेट यहाँ हैं? और टैबलेट बाहर पड़ा था ना। टैबलेट पे चलाना है लैपटॉप पे चलाना है? क्या कह रहे हो? देखो लैपटॉप पे चलाना है या टैबलेट पे? अच्छा मुझे नहीं पता। हाँ। और बता बाकी क्या चल रहा है? चल रहा बेटे तुम बताओ। मेरा वही जानता ही है सभी कुछ, पे बकचोदी किस चीज़ की। शादी वाले बेटे हो तुम तो। शादी वाले क्या बहन जो लौड़े लगे बातें रहते। आए मम्मी क्या कह रहे हो? कौन मैं कर दूं? हैं? हम कर दूं? वो टैबलेट अटकेगा तो नहीं है? ज़्यादा हेवी टॉबलेट सुनी होता होगा। नहीं नहीं, वो इतना हैवी नहीं होता, होता है पर नॉर्मल इतना नहीं होता। नॉर्मल तेरा फ़ोन अच्छे मतलब आराम से चल जाएगा। i3 बहुत सही है। टैब पे ना टैब पे। टैब पे चलाना है लैपटॉप पे चलाना है बहुत बड़ी के। मैं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर का एक एप्लीकेशन है, हाँ उसे टैबलेट पे चलाना है। ए भड़वा ऐसा बोलना चूती है। तूने बोला फ़ोन क्या चीज़ टैबलेट पे चलानी है लौड़ू। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है इसमें इसके इक्विपमेंट्स है वो फोन में एप्लीकेशन में मिल नहीं रहे हैं, जिसके इक्विपमेंट है फोन वाले एप्लीकेशन में मिल नहीं रहे हैं। ये मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता कि बहन जो People फ़ोन ought की not be so उसको frightened गेम of को तो मैं कर भी ghosts. सकते हैं, एमुलेटर्स होते They are हैं, merely पर ऐप को talking कुछ नहीं होता। shadows, chattering away endlessly about their past ऐप का तो affairs. मुश्किल ही है तेरे लिए। वो बता जो नहीं हो सकता, एपीके तो नहीं बना पाएगा उसको। देखना तो बड़ा क्या होता देख ले, अगर 40-50 हज़ार रुपये खर्चा करे तो मैं तेरे को छोटा सा कीबोर्ड वो दिला दूँ। तो चलाना क्यों है टैब पे? हैं? ओ भड़वा। चलाना क्यों है टैब पे? हाँ, क्योंकि वो तो कंप्यूटर्स पे ही ऐसा चीज़ें अच्छी लगती है ना, मतलब थोड़ा सा वो बड़े साइज में हो। को बुलाया था, मैं भी अपने फोन से करता था। हाँ मैं चाहता हूँ क्या बोलते फोन का बीच में फोन आया था तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैं सोच रहा था कि वो फोन का इमीडिएटली खत्म हो जाए। तो क्या फ़ोन हो रहा तू है? फ़ोन पे कर सकता है तो टैबलेट पे क्यों नहीं हो रहा? सुन चलो फिर आगे। हाँ तो हमारे बड़े भाई ने बड़े भाई साहब ने कोई मतलब उसने कोडिंग तो उन्होंने ऐसी चीज बनाई है जो हाँ अपने आप क्वांटिटी को कैलकुलेट से कैलकुलेट करके हाँ। खुद ही वो मतलब तुम्हें कैंडल पे ट्रेड लेना है तो कैंडल पे 1 सेकंड के अंदर ट्रेड ले लेगी अपने आप ही। ठीक है। तो वो उसने कोडिंग से उसमें मतलब कोई एल्गो रीडिंग की तरह उसमें कुछ हाँ मतलब कर ली, अपनी कोडिंग कर ली, ठीक है। हाँ। अब ये इशू आ रहा है कि वो फोन के सॉफ्टवेयर में मतलब मिक्सअप होती है, वो उसमें हो जाती है कंप्यूटर वाले पे। हाँ तो तेरे भैया किस पे कंप्यूटर पे ही कर रहे हैं ना? हाँ हाँ। तो भड़वे तू काहे ऊपर ऊपर स्मार्ट बन रहा है नहीं तो तो भी। मुझे कह रहे हैं ऐसा कोई तरीका हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर यही वाला फीचर सेम फोन में मिल जाए। मैंने जितना अभी तक मैंने टेक न्यूज़ देखी है, जितनी भी देखी है, मुश्किल मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हैं वो उस पर फ़ोन पे रन कर जाएं। ये थोड़ा मुश्किल ही है। देख सकते हैं तो देख ले बस, पर ये है कि कंप्यूटर पे तो अपना फ़ोन चला सकता है, ये तो मैं बता सकता हूँ, पर वो फ़ोन पे नहीं चलेगा। कंप्यूटर का सामान बहुत मुश्किल ही है मेरे को लगता है। देख लेगा यूट्यूब पे देख लेगा, कोई कुछ आलतू फालतू वाला ऐप वैप अंग बंग बकचोदी आ गई हो
कुछ ना कुछ तो आते ही रहता है ना, हम लोग को पता ही नहीं लगता क्या आ गया क्या नहीं आ गया। पर ऐसे वो डिवाइस तो आ गए हैं जो मतलब पोर्टेबल ही होते हैं, कंप्यूटर ही होता है पूरा का पूरा हाथ में। मैंने चला के देखा था भाई, बहुत सेक्सी लगता है। राइजन का आता है, बहन जो कितना प्यारा लगता है यार, हाथ में पकड़ो पूरा का पूरा कंप्यूटर तुम्हारे हाथ में है। मेरे को क्या लेना, लेके करना ही क्या है। नहीं मेरे को बहुत सस्ते मिल रहे हैं। मैं तो अभी मैं 4 दिन पहले मैं खरीदा है, खरीद लिया था, बढ़िया मिल जाते। दिव्या किसने खरीदा अभी? मैं कह रहा हूँ मैं रुक के ले लेता तो बढ़िया मिल जाता, मैं ले लिया। अब तो तेरे को क्या पता था जीएसटी कम हो जाएगी? जीएसटी में लैपटॉप पे तो कुछ वैसे हुआ नहीं ज़्यादा कुछ फर्क। सेल पे भाई वो तो नॉर्मली सभी को पता है कि इसमें थोड़ा बहुत आ जाता है। मैंने इस बार तो थोड़ा ज़्यादा चूतिया बनाया और कुछ नहीं बनाया। इस बार साला सेल्स में चूतिया ही बनाया है। जो फ़ोन बेंचो उसका नॉर्मल का आता है वो बेंचो चूतिया लोग 26,000 का दे रहे हैं। किस हिसाब पे दे रहे हैं पता ही नहीं। Let us have a modicum समझ रहे of हो patience तुम। for the richness लाड़ and समझ रहे हो। complexity of humanity. The wanton cruelty of the few is not worth our ire. कहाँ देख रहा है इसी में, यूट्यूब पे? नहीं वो फोन वाले एप्लीकेशन देख रहा हूँ, चार्ट टूडे और जगह रह गई है क्या? उसमें मतलब गूगल पे भी मतलब एपीके है ही नहीं उसका, मतलब ये बोल रहा है ना। प्ले स्टोर पे है ना वो, फोन वाले वर्जन में सब फीचर नहीं दिए ना सारे। ओके हाँ, और जो तू बकचोदी करेगा वो तो और भी नहीं आएगा उसके अंदर। हाँ वो पॉसिबल नहीं है, करना पड़ेगा वो तरीका नहीं है। कंप्यूटर हाँ वो तो है, कंप्यूटर पे ही करना पड़ेगा जब ऐसी चीज़ें हैं। भैया कोडिंग कर सकते हैं तो भैया को बोलो कि एक ऐप ही बना लो फिर कंपेट। हाँ भाई, जब इतना कोडिंग कर सकता है बंदा कि वो उसमें ये चीज़ मॉडिफिकेशन कर सकता है। बिल्कुल जो बनाई है हैं सही काम कर रही है जो उसने बनाई है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना भाई, अगर बंदा इतनी कोडिंग कर सके। और वो जो तू कौन सा ब्राउजर यूज़ करता है भाई जिसमें एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल अकाउंट चलते हैं? नाम मेरे को भेज देना। उसमें मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन कर सकते हैं। एक अकाउंट लॉगिन करो, हाँ जितनी चाहो उतनी डिस्प्ले खोल लो। एक ही अकाउंट की अलग अलग डिस्प्ले ना? हाँ जितनी चाहो उतनी खोलो, जितनी मेरी 8 खुलती है फ्री में। पता नहीं चलती, एक भी लाइनर नहीं आती बीच में कि भाई साहब ये पता लग रहा हूँ कि ब्राउजर खुला है। मेरे को भेजना, इसका नाम भेजना। चलो और बताओ। और कुछ नहीं। ये ब्राउजर कहाँ पे है, गूगल पे है या उस पे स्टोर पे है? मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। क्या नाम था? विवाल्डी, VIVALDI। ये मिला किसको भाई इतना फालतू वाला ब्राउजर? वो यूट्यूब पे दिया हुआ था, ट्रेडिंग के लिए दिया हुआ था। एक मतलब आपको 4 डिस्प्ले चलानी हो तो चला सकते हो फ्री में। तभी वो तेरा पैसा बच गया ना बहुत सारा, वो साला खर्च करता था उस चीज़ में। सही है, चलो कर ले। मिला कुछ ऐसा तेरे को जिसमें फोन उसमें लैपटॉप पे चलता है? मैं तो ये होता है इसी में कैसे कर दूं। किसमें करता हूँ? किसमें क्या करता है फोन पे? एक का या ये कर सकता है कि भाई एक दूसरे से फोन ले ले तू। तो ये है ना कि प्रॉब्लम तो वही है ना कि हाँ जो ऐप नहीं काम कर रहा, प्रॉब्लम तो वो है ना। लैपटॉप पे मैं लास्ट थोड़ा बैठा रहूंगा यार, 3 घंटे की बात होती है, 4 घंटे की सोच रहा हूँ कि जुगाड़ लैपटॉप नहीं रख जाएगी तरीके से। या ये फिर तेरे को मिनी लैपटॉप खरीदना पड़ेगा जो वो छोटा वाला आता है ना। खर्चा कुछ नहीं करना है, बता भाई हैं पूरे इक्विपमेंट में कुछ खर्चा नहीं करना है। खर्चा नहीं करना फिर तो बकचोदी है। फिर देख लो, फिर कंप्यूटर के सामने बैठो तो ये है ना कि मिनी लैपटॉप होगा ना, आराम से बेंच लेके इधर उधर घूमते रहो, जहाँ घूमना है वहाँ घूम लो। तो बनाता हूँ, सिस्टम बन जाएगा, सोचता हूँ। चलो अगर पता लगे तो मेरे को भी बताना। मैं तो मैं सब जुगाड़ बनाऊंगा, देखता हूँ कोई लैपटॉप को एक जगह फिक्स करा जाए। क्या हो जाए? लैपटॉप को एक जगह रखा जाए कि गिरे ना बस, और क्या है।
वो हो सकता है कि तू लैपटॉप को टेलीकास्ट कर सकता है अपने फोन पे। एक कमी है ना इसमें, वो स्लाइडर लगा होता ना, तो जो क्या कहते हैं लगी हुई टेबल में, कीबोर्ड नीचे आ जाता, कीबोर्ड नीचे आ जाता और ये जो लैपटॉप है वो ऊपर आ जाता। कीबोर्ड वो तो वायरलेस नहीं है? ये वायर वाला है, पर लाइटें जलती हैं इसमें। तो वायरलेस ले लेता। तो लाइट वाला नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, वो मिल तो जाता पर वो ये महंगा मिलेगा थोड़ा सा। लाइट कहाँ है, वो लोड कहाँ से लेगा यार, पागल है, इतना लोड कैसे ले लेगा, फिर वो चलेगी लाइट वाला, बिना लाइट वाला आता है वायरलेस। तो चार्जिंग वाले आते हैं ना आजकल, जो चार्ज हो जाते हैं। कोई ना, फिर नौटंकी बहुत होती है उनमें यार। लाइट जो अगर लाइट चलानी है तो केबल वाला ही होना चाहिए, झंझट नहीं है। तो दो, एक काम करना, एक वो नॉर्मल कीबोर्ड ले ले, दोनों सेटिंग बनाता हूँ, बन जाएगी। कनेक्ट तो दोनों कर सकता है वैसे। दो कमी है, तो टेबल बड़ी होती, मैं बता रहा हूँ, तो सब कुछ हो जाता। टेबल बड़ी होती तो क्या करता? तो आराम से लैपटॉप भी रख दीजिए और टीवी को और ऊपर करके। स्टैंड ले लेना, स्टैंड मॉनिटर से उसमें लगे हो यहाँ देखो, फिर तो टेबल वैसे देखनी पड़ेगी। देख ले, टेबल तो तेरे पास, टेबल तो जुगाड़ हो जाएगी कहीं से, किसी के सेकंड हैंड ले ले। क्या हो रहा है समझ रहा हूँ मैं बेटे, बहुत ज़्यादा समझ रहे हो तो। जुगाड़ देख रहा हूँ तो मैं, चलो मैं दिमाग लगाऊँ, करता हूँ। ठीक है, तुम फाड़ देंगे, तुम फाड़ देंगे भाइयों, बाय बाय। टाटा।
Observe. I'll protect us. Close your eyes. Be silent. Close your eyes. Perhaps these treasures might be of utility to you on your journey. Please, I insist. Be silent. Close your eyes.
observe. Be silent.
This will be interesting. Freeze! Dodge this! Freeze! What's the hurry? हाँ हेलो, हाँ, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठा हूँ। बताओ। क्या? बैठा हूँ, गेम कर रहा हूँ। बताओ। ये भी चल रहा है। कुछ बनाया तो नहीं है ना? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मैं ले आ रही हूँ, एग ले आ रही हूँ और दूध ले आ रही हूँ। ठंड लग रही है बहुत तेज भाई, बहुत ठंडा मौसम हो गया आज ही रात में। ठंडा आ गई यार एकदम। तो क्या चाहती हो? क्या? एग का क्या करोगी? एग का आमलेट बना लेंगे ना। तो बहुत दिन हो गए हैं आज आमलेट नहीं खाया। ठीक है। ब्रेड ले आ रही, ब्राउन ब्रेड ले आऊं? ब्रेड नहीं। वाला खाओगे सिंपल वाला खाओगे? सिंपल खा लेंगे। बताओ तो ब्रेड खा खाओगे? नहीं नहीं, खाली रोटी, रोटी और वो भुर्जी बना लेंगे। बना लेंगे यहीं पे रुक। रोटी की भुर्जी बना लेंगे तो नहीं रुक दो। There's still a long भैया road यहीं ahead. रुक तो बस। हेलो, हाँ, क्या कह रहे हो? रोटी बना लेंगे उसमें? रोटी और भुर्जी बना लेंगे। भुर्जी बना लेंगे। नहीं, चलो ठीक है, आ जाओ। हाँ ठीक है। एक दूध का पैकेट निकाल दो। दूध क्या करना है? चाय बनानी है, ठंड लग रही है यार मुझको। अरे उसमें भी अदरक डाल लेना है। अदरक की तो भरोगे तुम। एक दूध का पैकेट आ रही है।
Close your eyes. लाइट जला लेना पहले, सामान वामान पड़ा है. Receive my blessing. Time for retribution! Forest, protect us. Observe.
Branch into song. वो चूतिया का कपड़ा लेने गया मैं, उन लोगों ने बहन जो कचड़े के डिब्बे में उसको रख के रखा है। It's a grave situation. Burn no more. मैं लेके ही नहीं आया, मना कर दिया। बहुत बड़ी का मैं कचड़े के उसमें हाथ नहीं डाल रहा मैं कुछ भी। उन लोगों ने कचड़े की बड़ी सी प्लास्टिक है उसके अंदर भर के रखा था, चूहा हुआ सब काट गया है, फट बहुत सड़ी गया है, कुछ नहीं बचा उसमें। मैं वीडियो कॉल पे दिखाया मैंने ये देख ये हाल है। क्या कहेगा भाई, मैंने छुआ ही नहीं, मतलब मैं नहीं छू रहा इसको। You should really. हाँ? पैसे वैसे इसमें वो दिए नहीं दिए पता नहीं। आंटी को भी फ़ोन आया है, जैकेट वैकेट सारी कुछ सब कुछ ख़राब है भाई, और हम क्या ही कर सकते हैं। ये बोला था चूतिया उसमें रखे हैं बॉक्स के अंदर में, वहाँ पे जाके पता लगा था कि मैंने जो कचड़े के पैकेट में रखे हैं। और वो बंदा कहाँ गया जो खाली करके गया था? वो चला गया अपना, उसका काम हो गया तो वो अपना चला गया। तो उसने बताया नहीं था कि ऐसे ऐसे रखा है? उस ये बोल रहा था कार्टून में रखा, अगर ये पहले मेरे को उसने कार्टून बोला तभी मैं गया, मैं चलो ठीक है ले आ रहा हूँ। वो बहन ने उसने साइड में से कचड़े की पैकेट में से निकाला, मैं वो पड़ी के कहाँ पे, मतलब कचड़े के पैकेट ऐसे जैसे वो होता है ना पिलर कोई होगा यहाँ पे बैठते हैं ना, वहाँ पे ट्रांसफार्मर थोड़ा टाइप में लगा है, तो उसी के पीछे में एक बड़ी सी पैकेट थी काली काली, उसके अंदर रखा था। छूटिए सारे वो बंदों ने रखा, जिस बंदों ने इसका रूम खाली किया उन लोगों ने वैसे भर के रख दिया, फिर उसके अंदर किसी ने खाने वाने खा के कचड़ा भी डाल दिया। मैं उठा भी लिया था, वो चूहा वाला होता तो, फिर वो है कि उस सालों ने उसमें खाना वाना खा के वो पैकेट डाल दी। भाई मैं नहीं उठाया उसमें, मैंने जैकेट उठाने की कोशिश की, जैकेट उसने बोली रेमंड की है, मेरे को पता ही है रेमंड की है, मेरे टाइम में खरीदी थी। मैंने उठाने के हुआ उसमें तो पहले तो चूहे हुए काटे हुए हैं, फिर उसमें से मैंने कॉकरोच निकले हैं, पर बहुत सड़ी देख ले कॉकरोच, मैं नहीं उठा रहा इसको। वीडियो कॉल पे दिखा Be silent. हाँ? एक सेकंड रुक जाओ। Observe. Perhaps these treasures might be of utility to you on your journey. Please, I insist. Close your eyes. Be silent. Where are you? Close your eyes. Let's dance. Out of my sight.
Observe. Close your eyes. Winter shall eventually. Perhaps these treasures might be of utility to you on your journey. Please, I insist. Observe. Let the show begin. Yes, that'll do. Just a quick and simple cleanup job. Huh, little one, you're just in time. Oh, look at you. I can tell you're thinking. Oh no, she's going to send me off on some pain-in-the-neck errand again, isn't she? Don't worry. I was just going to say that we finished renovating the shrine and are preparing to roll out a brand new service. Now, I haven't had the chance to announce it yet, but here you are already. Wouldn't you agree that's good timing? See this offering box beside me? There's going to be another place to make wishes here soon. That's different. Fortune slips are about telling fortunes, whereas this is about making wishes. Now then, close your eyes, make a wish, write it down on a prayer plaque, then hang it up on this rack here, of course. But as for which wishes come true, that is up to the gods who watch over us all. Powerless Guji that I am, I can only help you in mortal matters.
If that's what you wish for, then why not try it out? Here, take this fortune paper. It's left over from writing fortune slips. You can have it. Try writing your wish there. That might make it more likely to come true. When have I ever lied to you? Hurry up now, little one. It's time to make your wish. Remember to write your wish on the fortune paper, then stick it to the prayer plaque and hang it on the rack. After that, your wish will be made. Yes, nice and solemn. Very good. All right, little one, back to business with you. Remember to keep your ears pricked and your eyes open. After all, the person you wish to meet might just be sitting at some noodle stand, having themselves a lovely bowl. And bring me back one while you're at it. What? Another bad one? No, let me try again. Another bad one? No, let me try again. Do you think that's Lady Yi? Oh, no wonder Junyo is so excited. She has a really striking presence. Also, is it just Paimon? Or did she look right at us just now? It was probably nothing. It's not like she's ever seen us before. Keep away. Keep away from me. I gave up the art of the sword. Please, let me go, I beg you. As you can see, Lady Yi, Domon has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in duels past, gathered all around him to persecute him. Lady Yi, it must be a possession, right? This is nothing like him at all. In the past, no matter what came his way, he would always face it with a confident smile. I'm sorry. It is clear to me that your sensei is not possessed by any evil spirit. But then does that mean he... Yes. This is a change in the person himself. Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. With his wits impaired, he finally descended into madness. As one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths. As for what has triggered this change, I believe it must be the loss of his vision. For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's ambition. Stripped of his ambition? But Lady Yi, even without his ambition, why should he suffer such a dramatic change? How does that explain his descent into madness? Your school practices Meikyo Shisui art, does it not? Stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that would be if any in this world could ever hope to achieve it.
There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that he crossed blades with a disciple he himself had taught. Then, what of the one who crossed blades with his own sensei and beloved fellow disciple, and defeated them both? Can one truly remain unagitated, of still mind in moments such as these? Lady I'm not sure I understand. The path of the swordmaster is filled with twists and turns. It is no small undertaking to pursue the position of greatest swordmaster in the world. It requires one to take their sword firmly in both hands and cut down the hopes and dreams of others, even those of one's closest companions. Only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him to rise above the pain of these encounters, to focus on the way ahead. When that ambition disappeared, he began to doubt himself. As he battled his growing anxiety, he slowly descended into the state you see him in now. Much like a certain fatally flawed friend of mine. Poor Sensei. To think he's been suffering so greatly. I'm sorry. It's all my fault. Father, Sensei, Anzai. That's enough. Huh? Isn't that Anzai? Where did he come from? Did he follow us the whole way here? Anzai, why are there two of you? Is that you or a ghost? You're here for revenge, aren't you? I knew it would come. I never should have. You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. But I didn't come here to settle a score. It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong that day. I couldn't face the humiliation. That's why I ran. I don't think most of the people you beat along the way would hold it against you. On the contrary, when you cut our ambitions short, we entrusted them to you, in the hopes that they might carry you further. Now I know that we can't place our hopes in you any longer, since you've been stripped of your ambitions too. But that is no reason to strip them of theirs. But what if one day, the same thing happens to them? I put everything I had into trying to become the best. But what if it was all a huge mistake right from the start? If there's a chance they'll end up like me one day, I'd rather they stay where they are now than go any further down this path. Have you asked them what they think? Sensei, after you rescued me from the hands of the pirates, I told myself I would follow in your footsteps for the rest of my days. I can't know whether I will suffer in my future as you do now. All I know is that here and now, in the present, I wish to continue. I want to keep going until the day that I can stand before everyone with my head held high and announce that I, like my sensei Domon before me, am a master of Meikyo Shisui art. Nanako's far from the only one. Actually, all of us think that way. Goodness. Well, You see? You can place the ambition you once had in their hands. Being stripped of your ambition is something that's never happened to me, so I can't claim to understand it. But I do know what it feels like to have your ambitions crushed. That's what happened on the day that you so effortlessly defeated me. So, just as I once placed my ambitions onto you, it is time for you to release yours into their custody. You are not in the same position that I was. When I left, I had nothing to my name. But you have a great number of worthy disciples. I understand. I'm sorry to have made you worry for me, and for the state of Meikyo Shisui art. I no longer have the resolve to become the best in the world,
The emptiness and suffering inside of me will not abate, so I cannot hope to still my mind and be free of agitation. But as your sensei, I shall commit to imparting unto you everything I have learned in my life so far. This is my promise, and I humbly ask Anzai, my senior, to hold me to my word. You can count on that. I'd be checking in on you occasionally anyway, just to make sure you hadn't lost your mind again. But I am now used to the life of a wanderer. I do not belong in the dojo anymore, so I will simply stop by once in a while to make sure you aren't cutting any corners with them. Well, don't just stand there staring at me. Say thank you to Lady Yai and then get yourself back home. So even though his ambition was taken away, his disciples can take it over on his behalf. Guess that sort of solves this one, huh? Traveler, a moment, please. Lady Yai has some words for you. So, my intuition was correct. The wind that blows from afar carries fresh life to these shores. For us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. I have high hopes for you, child. Don't disappoint me. Ooh, Lady Yai seems to have taken a real interest in you. She seems super mysterious. Paimon's so curious what she really meant by all that. We can come back to it another time. For now, we should go report back to Miss Kamisato.